start a language. So it's something like asking a question in Spanish. Is it clear to you? Okay. ठीक है. So there are a lot of ways, to ask the question in Spanish. Now, for example, in English, if we say, if I say, you are English, aren't you? Isn't it? FOMO. Is it clear to you? So Yeah. aren't you का मतलब क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ. What is this? I'm asking you. You are English. Is it right or wrong? Aren't you? Is it really? Is it right that you are English? The sense. What is the sense of the language? Today we have the sense of the language. If I'm asking to you, you are English, aren't you? Aren't you का what is the meaning of aren't you? It means really? क्या तुम नहीं हो? Yes, really? अच्छा एक second, Fahad bhai, I'm getting one phone call. 1 second, yeah. I will take the later on. So, aren't you? Yes. Are you really an Englishman or not? Is it clear to you? So, I will say, tu eres inglés. Tu eres, you are Who it English. is? Eres Who it inglés. is? Yes, I can say, tu eres inglés. Inglés, verdad. 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 So, verdad Vedad. is Aren't you? something like really. Verdad. Is it clear to you? I'm just asking to you. Truth. Is it really? 1 second. Okay. Verdad. Okay. Hello. Okay. Hello. 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 Yes. Verdad. So repeat after me. Repetir por favor. Repetir por. Eres inglés. Eres English. Eres Eres English. Vedad. inglés. Eres Verdad. English. Vedad. Uh-huh. Eres Vedad. inglés. Verdad. Okay. Vedad. Is it clear to you? Okay. तो बस एक सेकंड आपको होल्ड करना पड़ेगा because I'm getting one phone call that's I think important No one. issues. No issues. Okay. ने आप रिपीट करो उसको रिपीट इट प्लीज. Eres inglés. Verdad. So now we have a second question. Now, now, for example, okay, I will say to you, uh, wouldn't you like something to eat or drink? Wouldn't. So basically, I'm asking you, you want something else to eat. I'm asking Farad Bhai, okay, I will explain to you first. We have a querer verb. Repetir, por favor, querer. Repetir, por favor, querer. We have a verb, querer. Is it querer? Can you hear me? Querer. Querer. Farad Bhai, you there? Hello? Yeah, you there? Farad Bhai, you there? Hello? Hello. I'm here. I'm here. मेरा भी Okay. call आ गया था. Okay. Querer is my verb to want. Querer. See, what is this? The questions. Wouldn't you like something to eat or drink? What I'm saying. It means you, would you like really you want this? If, for example, if I wouldn't you like something to eat or drink? It means what? The sense of language is you want something else to eat and drink. You want. So over here we have verb querer. Querer is my verb to want. To Is it? have. To want. Yes. So, repetir por favor. Yo quiero. Repetir por favor. Yo, Yo quiero. yo quiero. Is it clear to you? Mm-hmm. Tú quieres. Because we have E, that E is converted into IE whenever we have conjugation, but not in nosotros and vosotros. So,
quieres. Tú quieres. Él, ella quiere. Él, ella quiere. Ok. Nosotros Queremos. queremos. Is it clear to you? Mm. Vosotros Vosotros queréis. Vosotros queréis. Vosotros queréis and ellos, ellas quieren. Vos queréis. Quieren. Ellos, ellas quieren. Quieren. Is it clear Okay. to you? So, repetir por favor. Yo quiero, tú quieres, él, ella quiere, nosotros queremos, Nosotros queremos. vosotros queréis, Vosotros and queréis. ellos, ellas quieren. So, yo quieres to I want. Tú quieres, él, ella quiere, nosotros queremos, queréis, and quieren. Is it clear to you? Yes. Is it clear to you? Now, very important Yes. to understand. Iste, o, imos, isteis, eron. What is my preterite? What is my preterite of querer verb? Preterite. Preterite of what is this? My want, querer verb. So what's the formula of this? Iste, iste, okay? Iste, o, iste, o, imos. O, imos, Oímos. imos, isteis, Estéis. hieron. And It is very important to understand now because we are in the pattern now. Yes, preterite. So preterite is my verb basically, sorry, is my verb for a past. Okay. Past. I will, Correct. yes, I will say yo quise. Yo quise, tú quisiste. Tú, yo quise, Este. tú Ella. quisiste. Quisiste. Okay. Quisiste. Ella quiso. Yo quise, Él tú quisiste, él, quiso. ella quiso. Is it clear to you? Nosotros quisimos. Nosotros Ya, quisimos. Nosotros quisimos. Ok. Quisisteis. Vosotros quisisteis. Ellos, ellas. Vosotros quisisteis. Quisieron. Vosotros quisisteis. Quisisteis. And ellos, ellas quisieron. Yes, vosotros quisisteis. And ellos, ellas quisieron. Quisieron. Ellos, ellas quisieron. Is it clear to you? Now repeat after Yeah. me. Yo quise, tú quisiste, él, ella quiso, nosotros quisimos, vosotros quisisteis, ellos, ellas quisieron. ये बहुत important है समझना. Iste, o, imos, isteis, hicieron. Quise, tú quisiste, él, ella quiso, nosotros quisimos, vosotros quisisteis, and ellos, ellas quisieron. Is it clear to you? So Yeah, it's clear repetir to me. por favor. Yo quiero is Yo to I. quise, tú If I quisiste, will ella say, quiso, nosotros okay, quisimos. Radha, एक second. If you have a present tense of the querer verb, okay, so you will say yo quiero, tú quieres, él, ella quiere, nosotros queremos, queréis, and quieren. Repetir por favor. Ya. Hmm? Yo quiero, tú quieres, Quiero, él, ella quiere, tú nosotros quieres, queremos, vosotros él, queréis, ella él, ella quiere. queremos, okay, queréis, and quieren. If we Él, have ¿qué a quiere? preterite, Preterite. so we have yo quise, tú Yo quisiste, quise, tú él, ella quisiste, él, ella quiso, nosotros nosotros quisimos, quisimos, vosotros quisisteis, quisisteis, él, and ellas quisieron. quisieron. Is it clear to you? Ya. Now, for example, if I'm saying, wouldn't you like something to eat or drink? Wouldn't you? I'm asking to you. So what I will say, ¿quieres? ¿Tú quieres? Is it clear to you?
Okay, very Yeah. simple, very simple. Wouldn't you like to eat? No quieres, because I'm asking to you, Mhm. tú quieres. Tú, present Mhm. tense, tú quieres. Is it clear to you? So no, Yeah. wouldn't you? No quieres tomar. Tomar is No. my verb to take. Tomar. Tomar is my verb to Tomar. take. Tomar. I'm saying, wouldn't you like something to eat or drink? I'm not using a literally translation. I'm using algo. I'm using algo over here. Algo. Algo, algunos, algo. So algo is something like something. You like something, because we cannot go for a Okay. literally translation, because this is Hmm. language. I will say, would you like something? For example, you Mhm. come in my house and I come to your house. You say, okay, you want something Okay. else. You want something. I will, wouldn't you like something? Wouldn't you? No quieres tomar algo. No quieres tomar is my verb to take. Would you like to take something? Okay. Wouldn't you like to take something? No quieres tomar algo. Is it clear to you? No. Okay. No quieres. No Tomar, quieres tomar tomar algo. 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 Algo is something. Algo. Okay. Is it clear to To you? drink something. Yeah. Algo. Wouldn't you like to take something? Algo. Algo. Is it clear to you? No quieres. Is it Yeah. clear to No you? quieres tomar. Tomar it means to Take. have. Take. To Have. take. To To take. To take. Tomar. to take. Tomar. Tomar is my verb to take. Is it clear to you? Right. Okay. So if I'm saying no quieres tomar algo, is it clear to you? Okay. No quieres tomar algo. Okay. Yes. Now I have a question here. Mm-hmm. Mm-hmm. Is there any other sense we can make out of it? Yes, bilkul. Bilkul, we can do this. If I'm saying is make a sentence. Make a sentence. Would you like, make a sentence, please. Would you like Would you like? to Okay. Would you like? eat or drink? Would you like to eat or drink something which maybe I'm just making a sentence. Would you like to eat or drink something which is which you can no? I can say, would you like something to eat or drink? और अच्छा चलो इतने अगर मैं करता हूँ, would you like to eat some? I will say, te gustaría comer o beber algo. Te gustaría. Gustar verb. I'm saying because would. You know what? I'm saying, would you like? Would you like? So I'm saying te gustaría. Why gustaría? I will explain to you. We have verb gustar. Gustar. Gustar is my verb to like. Gustar. Yeah, Gustav. Is it Would clear to you? you? So it's a Gustar is my verb this to form like. is Gustar. conditional. Yes, Conditional. conditional. So it would be gustaria. Yes, yes. So gustar is a verb to like. Te gustaría, because condition I will explain to you, both wala. So we can have an ending of ria, ria, R-I-A. I Correct. will explain to you. Te gustaría comer. You'd like. Okay, would you Comer. like? Would you like Would to you eat? would like? Te gustaría. That's a verb. Comer, eat. O Comer. Eat. beber, to Oh, drink. Eat or beber, drink drink. algo Yeah. And something. something is algo. Yeah. Yes. Is it clear to you? So So te it would be te gustaría. gustaria comer o beber algo. Exactamente. Is it clear to you? Right. Is it clear to you? Now I will Yes, go for a certainly. question which is making up your voice, which is making up your voice. Now, for example, I will say, do in terms of yes and no. If I'll say, do you speak Spanish? In terms of yes and no, मैं बोलूंगा hablas español. Hablas Hablas español. español. Hablas español. मैं बोलूंगा, is he a teacher? For example, if I'm saying, is he a teacher? मैं बोलूंगा, is professor. Because my tone, you see my tone, is professor. Is professor. Okay. It Is, depends on the tone. yes, your voice go up. Asking a question by making your voice go up. Hablas español. Es profesor. Oh, Is it clear to you? If I'm saying, is there any okay. milk? Okay. If I'm saying, is there any milk? I will say, hay leche. Hay Mhm. leche. Hay. There is and there are. Hay leche. Hay leche. Do you like music? Do you like music? I will say,
te gusta la música, te gusta la música, te gusta la música. Esta la It's clear música. to you. Vale, okay. Now repetir por favor. Hablas español. Es profesor. Ay leche. ¿Te gusta la música? Is it clear to you? Profesor. Profesor. Okay. Then is there any milk? Yes. Hay leche. Hay Yes. leche. Ay leche. There is there are. Ay leche. Is there any milk? Ay leche. Is it clear to you? Clear? Do you Right. like music? ¿Te gusta la música? So I will say, did your sister? अच्छा अभी did वाला नहीं बताऊंगा अभी चलो You I like can music. okay Like अभी did music. वाला भी बताऊंगा चलो अभी बताते हैं so repetir por favor we have a verb comprar we have a verb comprar repetir por favor comprar let me write it Comprar. down comprar comprar is my verb to buy very important I will explain to you Comprar. comprar is my verb to buy comprar okay गलत हो गया. Right. Okay. Me gusta. We have a sense of here. So we have verb comprar. Okay. So comprar is my verb to buy, like to buy, comprar. Okay. Okay. Now this is my earning verb. You know, earning verb. The formula is what? Yo compro. Okay. Tu compras. Is it clear to you? Okay. Wo It's as a Elia it's compro. compra. Compré, yo compro, tú compras, Compramos. and él ya compra, nosotros compramos, Compráis. vosotros compráis, and ellos ya compran. Compran. Is it clear to you? Now. For example, if I go for preterite, because this is my earning verb. What is the formula of preterite? Compré, compraste, compró, compramos, Very comprasteis, good. Preterite in terms of earning verb. compraron, What will say? compraron. Haste o, hasteo, haste amos, o, hasteis, aro. amos, hasteis, aron. What I will say? Yo compré. Here, tú compraste. Compraste. Yo compré, Ella tú compró. compraste. Ella compró. Nosotros compramos. Vosotros comprasteis. Vosotros comprasteis. Ellos ya compraron. Compraron. Compraron, yes. Compraron. So we have a formula of haste o, amos, hasteis. Haste o, amos, hasteis, aron. Is it clear to you? Yeah, it's good. Clear? Okay. Yeah. Now, for example, if I will say, okay, for example, now we have to understand one thing over here. Very important thing we have to understand. The past, you know, we have a, in Spanish language, we have a past participle basically, which we called as past verb. Past participle. Yes. जैसे for example ये तो हमारे लिए एक verb चल रही है, right? A aste o, amos astes aron. But literally, if you have buy, and we say in English bought, right? So buy is my comprar. Okay. But what is the literally meaning of bought? Literally past is comprado. Is Comprado. Comprado. Okay. comprado. Is it clear to you? Comprado. Comprado. So buy, we have bought, comprar, comprado. Comprar, comprado. ये मेरा एक पूरा past participle है. Comprar आदो से लगता है, आदो, comprado. मेरा जो past participle है, that is comprar,
Ado. Comprado. Ado. Ado. Is it clear to you? So Okay. basically, a lot Okay. of things in past, like a, aste, o, amos, asteis, aron. So compre, compraste, compro, compramos, comprasteis, compraron. But over here, we have literally bought is comprado. Is it clear to you? Okay. It's one formula Hmm. for every AR ending verb. Yes, Like it would be ado. ado. Is Yes, it correct? yes. Now, for It's only example, one formula. there's yeah. For example, if I will say, did you buy? Did your sister buy a bread? It means I'm saying there's a past because did buy is my तुम्हारी sister ने क्या bread खरीदी थी? Did your sister buy? Mhm. अब मैं क्या बोलूंगा? Tu hermana. I will explain to you what is this. I will explain to you. Tu hermana ha comprado pan. Pan is my bread. Now, what is comprado is bought. What is a over here? Now I will explain to you. Any. Now, no. This is your verb basically. I will explain to you. Ha comprado. So basically, we used these verbs. Present perfect tense. I will explain to you now. I will explain to you what is present perfect tense. Present perfect tense. तो ध्यान समझना आप इस बात को क्योंकि थोड़ा सा हायर मॉड्यूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. If I will say in English, your sister, I will say one second. Your sister has purchased any bread. Or your sister has purchased the bread. Simple. Your sister has purchased. So this is my present perfect tense. In that case, very important to understand, has purchased, right? In that case, we have formula. मेरे साथ साथ बोलना है आपको ये फॉर्मूला, राइट? Okay. जो ए, repetir por favor. Okay. साथ साथ बोलना है आपको ये फॉर्मूला. Yo Okay. has जो purchased, A. has have, right? Has have. So has have क्या है? Yo a जो to है us to us. el ella Okay. a. L E A. Okay, el ella a. Is it clear to you? Nosotros hemos. Nosotros hemos. Hemos. Okay. Vosotros habéis. Vosotros habéis. Vosotros habéis. Okay. And ellos, ellas han. Now, what is this? I'm going to explain to you a lot of things over here. So basically, in Spanish, we have a haber conjugation. Now I will explain to you what is haber. You know, we have two type of ismr in Spanish. We have two type of ismr in Spanish. One is what? One we have ser and one we have estar. Right? Series estar. Ser and estar. Yeah. The same we have two type of has up in Spanish. One is tener, we have done yo tiene, yo tengo, tú tienes, correct? Yo tengo, tú tienes, él ella tiene, tenemos, tenéis, tienen. One, we have two type of has have in Spanish. Okay. One is tener verb. One is haber verb. haber verb जो मेरी लगती है ना, वो मेरी लगती है verb के साथ काम आती है. जैसे बोलते हो ना, I have done this, you have, वहाँ tener verb नहीं लगेगा. वहां पे मैं क्या लगाऊंगा? वहां पे haber verb लगाऊंगा. जैसे बोलते हैं ना, I have done, you have done. जैसे मैं बोलूंगी योर सिस्टर हैज परचेज्ड, राइट? सो उसके अंदर तेनेर हैज हैव नहीं लगाऊंगा, मैं वहां पे आबेर हैज हैव लगाऊंगा. क्लियर? दोबारा से सब बोलेंगे. देखो, आबेर मैं कब यूज करूंगा वो आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है. आबेर. आबेर. नहीं, वहां पे आबेर नहीं यूज होगा. आई हैव अ डॉग में आबेर यूज नहीं होगा. मैं कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ वहां पे तेनेर यूज होगा. जैसे कह रहा हूँ कि मेरे पास कुत्ता है, मेरे पास पेन है, मेरे पास ये है, मेरे पास दैट इज तेनेर वर्ब.
लेकिन आबेर कब यूज होगा? जब मैं उसको लेके जाऊंगा टेंसेस में, इन टर्म्स ऑफ आई हैव परचेज्ड, वर्ब के साथ। वर्ब के साथ मेरा आबेर यूज होगा। यू हैव डन, ही हैज डन, वहां पे मेरा आबेर यूज होगा, वहां तेनेर यूज नहीं होगा। इज इट क्लियर टू यू? इन टर्म्स ऑफ वर्ब कॉन्जुगेशन विथ प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, वी हैव यूज आबेर वर्ब। इज इट क्लियर टू यू? प्रेजेंट परफेक्ट में भी आबेर यूज होगा, राइट? क्योंकि जो मेरा वर्ब कॉन्जुगेशन है ना, मेरी बात को समझो, जो मेरा वर्ब कॉन्जुगेशन है ना, जैसे आई हैव परचेज, यू हैव परचेज, आई हैव डन, यू हैव डन, उस हैव में तेनेर नहीं लगाऊंगा मैं उस हैव में आबेर वर्ब लगाऊंगा, बिकॉज आबेर इज माय हैज अ वर्ब व्हिच इज कन्वर्टेड विद माय present perfect tense and the past perfect tense. Is it clear to you? ओके, इफ ओके, नाउ व्हाट आई अंडरस्टूड इज, Mm-hmm. सपोज अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कुछ लेना, कुक करना, और कोई भी ऐसा वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम आबेर का यूज करेंगे। या जैसे मैं बोलूँ सपोज कि yes, mm-hmm. हमारे पास सपोज अगर कोई वी ओन समथिंग, अगर हमारे पास कोई चीज है या Yes, हम, तो उसके अंदर हम तेनेर का यूज करेंगे, तेनेर वर्ब यूज करेंगे। राइट? जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव अ डॉग एंड कैट, वो मेरे पास है, वो आई हैव तेनेर, अ डॉग, आई हैव अ पेन, आई ये हैव अ तेनेर, मोबाइल फोन, आई हैव अ लैपटॉप, आई yes, हैव अ yes, कार, आई हैव अ हाउस। yes, उन सो इन सारी चीजों में हम लोग तेनेर का इस्तेमाल तेनेर करेंगे। वर्ब यूज करेंगे। सपोज Yes, अगर हम कोई काम करते हैं, सपोज आई एम ट्रैवलिंग, ओके, आई ट्रैवल, I have traveled, अगर आप बोल आई रहे हो हैव ट्रैवल। yes, तो उस केस में आप बोलोगे ए, बिकॉज मैं आबेर वर्ब यूज करूंगा। ओके, ए विया खादो, आदो लग जाएगा, क्योंकि विया खार इज माय वर्ब टू ट्रैवल। आपको एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। समझाता हूँ आपको मैं। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव ट्रैवल्ड, तो ध्यान समझना। तो विया खार इज माय वर्ब टू ट्रैवल, विया खार फुल वर्ब, लेकिन बिकॉज ये पास्ट है तो वे आदो बन जाएगा, विया खादो, विया खादो। अब आई हैव ट्रैवल्ड टू यो ए, बिकॉज दिस माय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आबेर का कॉन्जुगेशन क्या है? यो ए तू आस, तो यो ए या विया खादो, बिकॉज तो दिस हम इज इसको बनाएंगे यो यो ए विया खादो, विया खादो। कि ये मेरा आबेर वर्ब का कॉन्जुगेशन है, ये मेरा आबेर वर्ब का समझ गया। कॉन्जुगेशन है। यो ए, मेरे साथ साथ बोलो, आबेर वर्ब का क्या कॉन्जुगेशन है? यो ए तू यो आस, यो यो ए तू तो आस, आस एलिया एलिया ए, आ, एलिया आ सॉरी, nosotros nosotros habéis, nos, ellos vosotros ellas han. habéis, and ellos ellas han. Is it clear to you? So That's clear to me. repetir por favor, yo he tú has, ella ha, nosotros hemos, vosotros habéis, and ellos ellas han. Is it clear to you? अब That's ऐसे clear ही, to me. इज इट क्लियर टू यू? अब ऐसे ही मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिड योर सिस्टर बाय एनी ब्रेड, मैं बोल रहा हूँ तू hermana योर सिस्टर हैज परचेज्ड आ comprado, why आ comprado? क्योंकि एल या आ है, Because él एल ya का has, yes, conjugation है आ comprado pan. um, Is it clear to you? yeah, clear to me. Is it clear to you? So कुछ ऐसे Yeah, it's प्रैक्टिस clear to करेंगे, me. because entire video I will share with you, so we'll do the practice. अब जैसे मैं बोलूँ did you do it, it means you have done this. देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ did you do it, Us. Will you us? तो do is my verb, aser is my verb to do, aser, aser का जो past है that is hecho, aser जो past है that is hecho, literally past क्या है? hecho. Is it clear to you? Okay. देखो बिल्कुल ध्यान Did you समझना, do it? aser, aser is my Us. verb to So, do, aser. Is it clear to you? yeah, it's clear to aser me. का जो past है that is जो past participle है that is hecho. Okay, that is hecho. तो जो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो, अब मैं बोल रहा हूँ चलो आप इसका बनाओ, चलो ओके लेट्स लीव दिस, आप बनाओ आई हैव डन, I have done. तो मैं अबेर वर्ब यूज करूंगा। अबेर क्या है? यो ए, I have done. AHO. yes, hecho, exactamente. You have done, what you will say? Tú has hecho,
to us, ho. Because we have Abir And verb, right? for did you do it? Did you do it? Did you do it? तो आप बोलोगे, इसका हम बनते हैं। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात को समझना, रुको रुको, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, हल्का सा बस समझाऊंगा मैं। it can be your masculine, it can be your male, it can be your female. अगर वो मेल है तो मैं बोलूंगा too low। ये एक मेरा रूल है, ये ना एक मेरे ऑब्जेक्ट्स लगते हैं ऐसे। मेरा क्या फॉर्मूला होता है कि जैसे मैं बोलूँ ना इंग्लिश में डिड यू डू इट, बट हिंदी में क्या है, तूने ये कर लिया, तूने ये कर लिया, तूने ये कैन बी लो और लास और ला। लो तू ले आस एचो, तूने ये इट लो, तूने ये कर लिया क्या, तूने, वो हिंदी से कॉन्जुगेट करना है। डिड यू डू इट, it can be your low because that's an object. It can be maybe something else, I'm not sure, so that it can be low. Could it be last as well? हाँ, अगर मैं बोलूं कि तुमने ये बहुत सी चीजें कर ली हैं, is it clear to you? तो वो प्लूरल हो जाएगा। Yes, if I will say तू लो आस, did you do it, तू लो आस एचो, did you do it, लो, did you do it, लो, is it clear to you? Yeah, it's clear to me. So I'm saying तूने ये कर लिया, is it clear to you? It basically it, I will say tu lo as hecho, is it clear to you? Lo has hecho. सही है। Okay, so basically lo is one of the Spanish word which is always a clear definition in terms of your, you know, object, because there's no, it can be an object. Okay, अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, a masculine direct object is my lo, which can be translated as him or it। वो ध्यान समझना, मैं आपको लो का मतलब बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। लो इज माय मैस्कुलिन, बेसिकली दिस इज मैस्कुलिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड लो can be translated as him or it। Is it clear to you? Lo can be translated from him or it। If I will say Pablo, I did not see him, I'm asking to Pablo, hello Pablo, oh I did not see him, I will say Pablo, no lo vi, I did not। अब चलो we, अब मैं आपको पहले कराऊंगा where conjugation, because now this is a pattern which we are moving on, or we have a where conjugation basically in Spanish। where, repetir por favor, where, बिल्कुल ध्यान समझना, बहुत important pattern है ये। where is my verb to see, is it clear to you? where, so where is my verb to see, is it clear to you? So the moment I will conjugate where verb, I will say yo veo, this is my present tense, yo veo, okay, tu ves, okay, ella ve, okay, nosotros vemos, okay, vosotros veis, and ellos ellas ven। तो ये मेरी वेर कॉन्जुगेशन है, yo veo, tu ves, él ella ve, nosotros vemos, vosotros veis, and ellos ellas ven। okay, so what would be my preterite of where verb? preterite, तो क्या हो जाएगा, e, फॉर्मूला क्या है, e iste o, e iste o imos, e iste o imos isteis, e iste o imos isteis hieron। preterite क्या है मेरा, e iste o imos isteis hieron। so I will say yo vi, tu viste, clear, él ella vio, nosotros vimos, vosotros visteis, and ellos ellas vieron।
So repetir por favor, this my preterite, yo vi, tú viste, él, tú ella viste, vio, nosotros vimos, vosotros visteis, and ellos, ellas vieron. visteis, ellos, ellas vieron. अब जो वेर का जो मेरा पास्ट है ना, ये ध्यान रखना है, विच इज विस्तो, ये ध्यान रखना है आपको। एंटायर सेशन में आपसे करूंगा और मैं आज खाली 1 घंटे का सेशन ही लूंगा और मैं उसको अटेंडेंस शीट में डालूंगा फराद भाई, ठीक है? लेकिन ज्यादा हैवी नहीं करूंगा बिकॉज दैट्स अ वेरी न्यू पैटर्न फॉर यू। आपको ये पैटर्न ना बार बार देखना है, विच इज वेरी, आपको बताऊं क्या करना है अब। जो पैटर्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको उसको देखना है दोबारा से, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग हर एक चीज का मुझे भेजना है। जैसे आप पहले जोट डाउन करोगे अपने नोटपैड पे, ठीक है? दैट हाउ यू विल गेट अ होल्ड इन द लैंग्वेज। उसके बाद क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको जो आपने जोट डाउन किया प्रॉपर, जैसे ई इससे ओ, आपको पूरा ना पूरा एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना है अलग अलग वर्ब्स का मेरे को। इज इट क्लियर टू यू? अब जैसे वेर का क्या है, विस्तो, पास्ट क्या है विस्तो। अब मैं बोलूं आई हैव सीन, अब आप बना सकते हो यो ए विस्तो, कर सकते हो यो ए विस्तो, बिकॉज आपको पता है कि विस्तो है। आप देर कॉन्जुगेशन यूज होगा, यू हैव सीन, व्हाट यू विल से, टू आस्क विस्तो, कर सकते हो टू आस्क, बिकॉज आप देर कॉन्जुगेशन यूज होगा ना, ए आस आ, समझ आ रहा है आपको? You have, it means you have seen, right? हाँ, because over here we are using aber conjugation, yo e visto, tu has visto, okay? मैं लिख दूं या कर लो क्या आप? लिख दो यार, वो थोड़ा सा ध्यान में रखो। Okay, yo he visto, tu has visto, okay? Él, ella ha visto, because a has a, yo e tu has, él, ella ha, he has, she has seen, okay? Nosotros hemos, so we have seen, hemos visto, right? Vosotros habéis visto. ठीक है। And ellos, ellas, habéis, then han, ellos, ellas, han. So this is my update conjugation, आपको समझनी है कि I have seen, where past is visto. Repetir por favor, जो where का जो past है that is visto, तो yo he visto, tú has visto, él, ella ha visto, nosotros hemos visto, vosotros habéis visto, ellos, ellas han visto. Is it clear to you? Yeah. Is it clear to you? Yeah, it's clear to me. Now, if I ask to you, for example, did you, okay, for example, I would say, did your father see you? चलो ऐसे बनाते हैं. Did your father see you? It means your father has seen you. मैं पूछ रहा हूँ, तो तू पादड़े, your father तू पादड़े, तुझे देखा क्या? तुझे, ते, तुझे, ते. बिकॉज देखो हिंदी में क्या है, तेरे पापा ने तुझे देखा क्या? तुझे, ते, ते, तुझे आ विस्तो. Why आ विस्तो? Because we have तू एलिया आ विस्तो. पादड़े ने देखा ना, तो पादड़े इज इन आ एलिया कॉन्जुगेशन. इज इट क्लियर टू यू? तो तू पादड़े ते आ विस्तो, तू पादड़े ते आ विस्तो. इज इट क्लियर टू यू? क्लियर फरहाद भाई? तू आ विस्तो, विस्तो. Yes. तू पादड़े ते आ विस्तो. हेलो, तू पादरे ते आ विस्तो, तू पादरे ते आ विस्तो. ते आ Okay. विस्तो. Is it clear to you? Yeah, Your clear to father me. has seen you, because this is now you're coming back with the past activity. अब मैं बोलूं, is the dictionary there? Is the dictionary here? अब डिक्शनरी क्या यहाँ पे है? It can be situation. This is a temporary. मैं पूछ रहा हूँ, is the dictionary here? Temporary situation. Here is Aki. Here we called as Aki. Aki. Yes, here. A-Q-U-I. Yes, A-Q-U-I. मैं बोलूँगा El Diccionario, the dictionary. Está aquí. El, because we have star conjugation.
is your dictionary here? It can be a situation which is temporary. So I'm saying el diccionario está aquí. Está el verb. El, ella, está. So diccionario aquí. Okay. yes, we have diccionario. We can have noun. So el diccionario está aquí. Is it clear to you? Okay. Is it clear to you? Yeah, it's clear to me. Now, for example, if I will say, for example, let's go. Did your sister? ये तो हो गया चलो. अच्छा, अगर मैं इसको और क्वेश्चन को तोड़ूं, अगर मैं लेट्स ब्रेक द क्वेश्चन आउट. डिड योर सिस्टर बाय एनी ब्रेड? तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, आ comprado, pardon, a comprado is what? You have purchased, comprar, comprado, a to your sister. So a comprado pan tu hermana. Is it clear to you? Did your sister buy any brand? Yes, देखो ना, a sister we have conjugate with ella conjugation, right? तो हम बोल रहे हैं a comprado because there's a past, a comprado pan bread tu hermana. So a comprado tu hermana. Is it clear to you? Okay, clear to me. Clear? Pan means bread. Yes, pan is bread. Is it clear to you? Yeah, I'll just repeat everything. हाँ, ये आप पूरा सेशन आपको देखना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है. तो जो आप देखोगे ना सेशन को, तो you'll come to know. जैसे मैं आपको लास्ट और कराता हूँ, ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा? नहीं. अब मैं बोलूँगा, did your boyfriend see the film? Did your boyfriend see the film? अब your boyfriend, did your boyfriend, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने? अब देखो पास्ट है मेरा ये, तो पास्ट क्या है मेरा? देखो वीओ ओ एलिया कॉन्जुगेशन है ना, बॉयफ्रेंड एलिया कॉन्जुगेशन से आएगा. Is it clear to you? Did your boyfriend? So what I will do? Vio la película. Película क्या होता है आपका? फिल्म. Película. फिल्म का नाम. Okay. Película आपने फिल्म. Tu novio. Novio होता है आपका बॉयफ्रेंड. तो वो कह रहे कि did your boyfriend, did क्या बॉयफ्रेंड ने देखी? बॉयफ्रेंड इज एलिया वियो. देखो ना यहाँ पे वेर वर्ब का क्या है हमारा प्रेतेरिते? ये देखो, yo vi, tu viste, elia vio, vimos, visteis, vieron. So I'm saying vio, ये ध्यान रखना है. Vio, okay. Vio la película tu novio. Vio la película tu novio. Is it clear to you? Fine. Is it clear to you? अब मेरे साथ साथ बोलो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आ dónde? Repetir por favor. A dónde? ¿A dónde? Por favor. A dónde? A dónde? A dónde? A dónde is where? A dónde eres? Where are you from? बोलते हैं. Where? And to. A dónde? Repetir por favor. A dónde? A dónde? Yes. A dónde? बोलो cómo. Cómo is how. Repeat after me. Repetir por favor. Cómo is how. बोलो cuál, cuáles. Repetir por favor. Cuál, cuáles. Which and what. Cuál, cuáles. So, a dónde, cómo, cuál, cuáles, cuándo. Repetir por favor. Cuándo. Cuándo is when. Cuándo is when. Is it clear to you? Bolo cuánto, cuánta. Repetir por favor. Cuánto, cuánta. Cuánto, cuánta is how much. Which, what. A dónde is where. Cómo is how. Cuál, cuáles, cuándo, cuánto, cuánta. Cuánto. Yes. Cuántos, cuántas. Cuántos, cuántas, how many. Cuántos, cuántas, how many. Is it clear to you? Okay. Then we have dónde. Dónde is again where. Dónde. De dónde eres बोलते हैं. Where are you from? De dónde eres. I will explain to you. Dónde. Para qué.
Repetir, por favor. Para qué? Para qué is what for? So what for? Para qué? ¿Para qué? Repetir, por favor. ¿Para qué? ¿Por qué? Repetir, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué is why? ¿Por qué is why? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Repetir, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué is what and which? ¿Qué is what and which? What for? Okay. Alright. Is it clear to you? ¿Quién? Repetir, por favor. ¿Quién? ¿Quién is who? ¿Por qué is why? So, ¿Por qué is why? Alright. And K is which? yes. Which? K is what and which, and quién is who. Now उसको repeat करो. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Which and what? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? And quién. Is it clear to you? Yeah. ठीक है तो फिर भाई हाँ इसका आप प्रैक्टिस करना क्योंकि थोड़ा सा हैवी ना हो सेशन आज क्योंकि पहला दिन है आज नए मॉड्यूल का सो थोड़ा सा लग रहा है हैवी मॉड्यूल आपको ये हाँ यार ये थोड़ा हैवी लग कोई बात नहीं इसका पूरा प्रैक्टिस करना आप ये पूरा रिकॉर्डिंग आपको मैं what is Kenan? Kenan who Kenan whose Kenan Kenan Okay. Is it clear to you? Fine. Yeah. Okay. So अब आपको क्या करना है आपको पूरा प्रैक्टिस करना है कल हम इसी चीज में आगे बढ़ेंगे ठीक है इसी में हम आगे बढ़ेंगे कल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम लोग करेंगे लेकिन आपको ना मैं नेक्स्ट 5 मिनट में भी ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में ठीक है आपको पूरा वीडियो देखना है आपको ये ठीक है इज इट क्लियर टू यू ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं क्योंकि ना कल हमारा जो होगा सारा क्वेश्चन आंसर होगा वो ना ही वांटेड टू नो वेयर माय फादर वाज गोइंग आई डू नॉट नो व्हाट टू डू तो इस लेवल पे आप एक डिफरेंट लेवल ये है जिसमें हम लोगों ने एंटर किया है ठीक है मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ वीडियो और आपसे नेक्स्ट 5 मिनट्स में वीडियो आ रहा है आप सब प्रैक्टिस का आपको मुझे टास्क क्या भेजना है एंटायर वीडियो का आपको जॉट डाउन करना है किया आपने कुछ जॉट डाउन या वीडियो के बाद ही आप जॉट डाउन कर सकते हो नहीं मैंने थोड़ा किया है अभी एक दफा जो मिस हो गया वो भी दोबारा आपको पूरा वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना है क्लियर दाकोर ओके वाले okay so adios I will meet you tomorrow same time so tomorrow we have 3 o'clock ठीक है फ्रैंक भाई ठीक है डन है okay